Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have discussed about the friction and the laws of friction. Now, we are going to start a topic, the basic properties. Clear? So let us discuss about the basic properties. Basic properties of friction have been described as such. First one, Amonton's first law. The force of friction is directly proportional to the applied load. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके अप्लाइड लोड के. अमोंटन सेकेंड लॉ. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किसके अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के. ठीक है. आफ्टर दैट द कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन. The Coulomb law of friction says that kinetic friction is independent of the sliding velocity. जो kinetic friction होगा वो independent होगा किसके sliding velocity के. ठीक है. A Monton second law is an idealization assuming perfectly rigid and inelastic material. For example, wider tires on cars provide more friction than narrow tires for given vehicle's mass because of the surface deformation of a tire. So this is all about the Amonton's and first and second law and Coulomb's law of friction. Now we will discuss about the types of friction. ठीक है. Types of friction. There are two types of friction. Types of friction. टाइप्स कितने होते हैं फ्रिक्शन के. फ्रिक्शन के टाइप होते हैं हमारे दो. देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. द फर्स्ट वन फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द सेकेंड वन फ्रिक्शन दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन. टू काइंड ऑफ फ्रिक्शन आर देयर. द फर्स्ट वन फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द सेकेंड वन फ्रिक्शन इज डायनेमिक फ्रिक्शन. क्लियर. Static or dynamic friction, these are the two types of friction. We will discuss about the static and dynamic friction in our next lecture. I think that's it for today. Thank you to all of you for watching this video.